Assalamu alaikum students, hope you all are fine. I have to recontinue the poem Rain, the second stanza. The reference and the context remains the same as of the first stanza. Now the explanation. And firstly the lines. And when the sun comes out and after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. Explanation. And when the sun comes out, after this rain shall stop. After the rain has been stopped, the sun will appear. It will shine brighter than before. The sunshine will spread everywhere. It will make the whole atmosphere lovely and bright. The dark round drops of water will begin to shine in the bright rays of the sunshine. Basically, here he is telling, the poet is basically telling that after the rain has been stopped, the sun will fill. The sun rays will fill each and every part of this world and each and every part of the atmosphere and environment around us, and the dark round drops of the water of basically which are the droplets of rain will begin to shine in the rays of the sun, and this will be a beautiful sight, and the sunshine will illumine everything with its brilliance. It will be a lovely sight. Basically इसमें वो यही चीज़ बता रहा है कि सूरज जो है जैसे ही निकलेगा, बारिश ख़त्म हो जाएगी, सूरज निकल आएगा और उसकी शुआएं जो हैं हर चीज़ को मुनव्वर कर देंगी, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा होगा। और जो बारिश के कतरे हैं इवन वो भी चमकेंगे सूरज की रोशनी से। इसमें आपने नेक्स्ट जो है वो सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है वो पूरी करनी है। करेक्ट आंसर्स, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, देन ट्रू फॉल्स भी देख लीजिएगा। इसके अलावा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम और हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, ये आप कर लें, याद कर लें। और जो एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, वो अगर आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल जो है, मतलब अभी जैसे मैंने आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ये सारा पढ़ाया है स्टैंजा 1 की, अगर आपने वही याद कर ली तो इस क्वेश्चन को अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं। एडिशनल में आपको व्हाट इज़ मेंट बाय द पुअर लीव्स क्वेश्चन 4 है। इसके अलावा क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ मेंट बाय द रिच लीव्स, what is meant by the poor leaves, how does rain fall on the poor leaves, what is the effect of the rain on the poor leaves, ये वाले क्वेश्चन 4 5 a। देन आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लें तो अच्छा हो जाएगा। राइट द मेन आइडिया और थीम, या फिर इसको आप देख लो वहीं कॉन्टेक्स्ट को कर लोगे तो वो मेन आइडिया ही है। इसके अलावा व्हाट इज़ द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द पोएम, और ये क्वेश्चन नंबर बनता है 14। और व्हाई डज द पोएट कॉल द अपर लीव्स द रिच लीव्स, ये वाला भी सवाल क्वेश्चन 11। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पोएम।